हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ सी बबल की। हम लोग पता करेंगे कि साउथ सी बबल में न्यूटन ने कैसे पैसा हराया, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही लॉस्ट क्लोज टू 20,000 पाउंड्स, जो आज के टर्म्स में कुछ 3 मिलियन पाउंड्स के आसपास है। एंड हम न्यूटन की लर्निंग्स आज हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लगा सकते हैं। So in the end of the video, we'll be talking about the big three lessons which we can draw out of Isaac Newton's experience, right? So let's proceed. तो हुआ क्या था कि साउथ सी बबल में एक साउथ सी कंपनी नाम की एक कंपनी थी, राइट? तो साउथ सी कंपनी विच वाज फॉर्म्ड इन 1711 मेनली टू ट्रेड इन टर्म्स ऑफ स्लेव विद द स्पेनिश अमेरिका. बेसिक premise was that ending of the war will lead to a treaty permitting such a trade. तो हुआ क्या था साउथ सी बबल में कि साउथ सी कंपनी नाम की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई थी। एंड उस टाइम पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। What are joint stock companies? Basically, where different shareholders come, they hire a professional board, and those shareholders hold shareholdings in proportional levels, and वो public को अपनी shareholding बेच सकते हैं without any liability. तो साउथ सी बबल भी इसी कॉन्सेप्ट से आई थी, साउथ सी कंपनी। तो उस टाइम पे जॉइंट लाइबिलिटी या फिर ये साउथ सी बबल की जरूरत क्या थी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डेट ले रखी थी, राइट? एंड इतना ज्यादा डेट ले रखा था कि दे नीडेड टू इंटाइज द प्राइवेट सेक्टर टू फंड द गवर्नमेंट डेट, बट कोई ऐसे फंड करता ना, राइट? तो उन्होंने दे बेसिकली दे गिव आउट अ कैरेट कि आपको क्या करना है कि आपको गवर्नमेंट के साथ पीपीपी करना है। पीपीपी आज की टर्म्स में जो हम जानते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि आप हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डेट आप लेंगे एंड आपका जो इक्विटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी एक्सचेंज में, विच इज बेसिकली अ डेट इक्विटी स्वैप जो उस टाइम पे हुआ। एंड इन रिटर्न जो साउथ सी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको 6% ब्याज मिलेगी डेट पे, दैट इज 6% एनुटी यील्ड टाइप मिलेगी। एंड उनको और क्या मिलेगा? उनको एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे टू ट्रेड फॉर स्लेव्स विद स्पेनिश अमेरिका। बट इस एक्सक्लूसिव राइट में एक बहुत बड़ा लूप होल था। क्या था वो लूप होल? बेसिकली कि अगर स्पेन के साथ इनकी फ्रेंडली ट्रीटी साइन होती तो ही ये लोग ये ट्रेड को कमेंस कर पाते, बट दे कुडंट साइन अ ट्रीटी एंड दैट ट्रीटी फेल्ड. बट नाउ लेट्स सी व्हाई डिड सो मेनी इन्वेस्टर्स गॉट स्टक. तो अगेन आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग लेसन, इस पे तो अलग से ही एक वीडियो बननी चाहिए, दैट व्हाई नैरेटिव ऑफन लीड्स टू स्टुपिडिटी. Right? Narrative often leads to stupidity. This has happened with me as well. This has happened with a lot of investors I know of. Someone will say कि value investing कर लो, ये कर लो, वो कर लो. But guys, all of that is narrative. Every intelligent investing is value investing. कोई value investing करता नहीं है, सब लोग intelligent investing करते हैं, फिर वो value investing बन जाती है, right? तो 2008 में भी सुजलॉन नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में बोला था कि हम लोग बहुत बड़ा कर देंगे, दुनिया में नंबर 1 विंड पावर इंफ्रा वाले बन जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं. फास्ट फॉरवर्ड 12 years डाउन द रोड, दिस कंपनी इज लाइंग इन एनसीएलटी, राइट? सिमिलरली साउथ सी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला कि they whet the investors' appetite with incredible tales and rumors of South American gold and silver just waiting to be imported back to Europe. उन्होंने बोला कि हमें सोना और सिल्वर अभी मिल चुका है, बस आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, राइट? So this is what the basic premise was. This is what the narrative was. Now let's proceed. So what happened in तो एक तो उनका ट्रेड तो कोलैप्स हो गया, जो ट्रेड स्लेव ट्रेड था वो तो हो नहीं सकता था. It became a quasi government entity. क्योंकि 1719 में 1719 में क्या हुआ कि 1719 में आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और नए शेयर्स इशू करे. एंड इस बारी शेयर्स इशू का क्या प्रेमाइज था? इस बारी शेयर्स इशू का ये प्रेमाइज था कि अगर हम साउथ सी बेसिकली उन्होंने साउथ सी कंपनी के शेयर्स लिए एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डेट थी वो साउथ सी कंपनी में आ गई. एंड इस बारी क्या प्रेमाइज था पूरी डील का कि देयर वाज अ प्रॉमिस दैट द इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट वुड बी रिड्यूस्ड टू 5% until the year 1727 and 4% for every year after that. This refinancing scheme allowed illiquid high interest debt to be converted into highly liquid low interest debt, basically in the form of stocks. So this was financial engineering, जिसके हम उसको नाम से जानते हैं. A win-win for all the parties involved. So basically intentions were good, but as they say, that road to hell is paved with good intentions, right? So this is exactly what happened in this scenario as well.
So British government की debt थी which was close to 50 million pounds, and out of which 11.7 million pounds was owned by the South Sea Company itself. Now let's see what happened with the stock price and what kind of financial engineering was involved, right? So see, I keep on saying this, that a rising share price makes makes a man blind, right? A rising share price makes a man blind. So what happened was that the company successfully sparked a speculative frenzy for its shares in 1720. There were 2 or 3 catalysts जिसकी वजह से ये frenzy हो गया था. The stock price soared from 128 pounds to 175 pounds within 1 month. In 2 months, it was a two bagger, मोटा मोटा 330 pounds के आसपास आ गया था. And within a short period of 5 months, it was close to 550 pounds, right? मानिए आपका 4-5 महीने में stock 5, 4, 5, 6x हो चुका है. Who could have let go of such an opportunity, right? So this is what the entire premise was. Now let's see why did this happen. एक तो गवर्नमेंट का लोगों को लगा गारंटी है कि गवर्नमेंट डेट है तो it won't ever default. And second thing was there was financial engineering involved. क्या थी financial engineering? Basically the concept of margin came into play. Let me just explain it to you. तो क्या हुआ कि इस कंपनी ने, तो जिस कंपनी के डायरेक्टर थे जॉन ब्लंट, तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक स्कीम इंसिनोवेट करी. एंड स्कीम में क्या था कि आप इस कंपनी के 1 करोड़ के स्टॉक्स ले सकते हो, पर उस 1 करोड़ के स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 20% मार्जिन मनी रखना पड़ेगा. दैट इज बेसिकली अगर आप 1 करोड़ का स्टॉक लोगे तो आपको सिर्फ 20 लाख रुपए गिरवी रखने पड़ेंगे इस कंपनी के साथ. तो मैं मोटा मोटा डेट बाय इक्विटीज ट्रांजैक्शन का 1:5 है. दैट इज 5x का लेवरेज है इस ट्रांजैक्शन में, जो आपका ब्रोकर आपको 10 या 11x का देता है. अब इस अजम्पशन में प्रॉब्लम कैसा रही कि क्या प्रॉब्लम है कि जिस दिन आपका स्टॉक 20% से गिर गया, उस दिन जो आपका लेवरेज है, जो आपका इक्विटी कैपिटल है, दैट वुड गो टू जीरो. यू विल गो बस्ट. तो मेनी पीपल वेंट बस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, क्योंकि वो स्टॉक की डिमांड और बढ़ाना चाहते थे, तो इस वजह से इट वेंट बस्ट. अब क्योंकि इतना ज्यादा जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर बूम चल रहा था, क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे कि हर बबल में पूरा का पूरा सेक्टर ही फ्रेंजी में आ जाता है. तो व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज के आईपीओ आने लग गए. लेट मी read out a few weird IPOs for you. So there was a joint stock company which issued an IPO which supplied fresh water to the town of Deal. There was a joint stock company which used to trade in hair. Then there was a joint stock company which was assuring seamen's wages. Then there was for importing pitch and tar. Now these 2-3 are very very funny. One was for insuring horses. Other one was for improving the art of making soaps. I don't know how do you improve the art of making soaps by doing an IPO, right? And last one was for improving of gardens. This is also very funny. This reminds me of a case. Let me just show it to you, right? 1 minute. SoftBank. So what guys ended up happening was in this VC scenario, so what SoftBank did was that 1 minute guys, just a second. So what SoftBank did was कि SoftBank invested in a, so what basically SoftBank did was SoftBank invested in a dog walking startup. And how much did SoftBank invest? Close to $300 million, right? It pumped a staggering $300 million into a dog walking startup called Wag, right? Which is too much in my opinion कि एक dog walking startup में आप $300 million डाल दो. So similarly, this was a case which was happening in the South Sea bubble. ऊट पटांग कंपनियों के IPO आ रहे थे, and जैसे SoftBank has also discovered कि only when the tide goes out you get to discover who is swimming naked, right? So this is what happened over here as well. We have to remember that for every balloon there lies a needle in the waiting. हर एक बलून के इंतजार में एक नीडल बैठी होती है, राइट? एंड जब वो नीडल और बलून मिलते हैं तो हमें पता है कि बलून फट जाता है, राइट? सिमिलरली साउथ सी कंपनी के केस में क्या हुआ कि शेयर्स लीप टू 1000 pounds per share by August 1720 and finally peaked at this level before plunging and triggering an avalanche of selling. एंड इससे क्या हुआ कि सिर्फ आपके जहाँ पे इंग्लैंड में ही ये नहीं था, सिर्फ यूके में नहीं था, सिमिलरली ऐसी एक कंपनी फ्रांस में भी थी, मिसिसिपी कंपनी नाम से.
वो मिसिसिपी के साथ ट्रेड करना चाहते थे एंड उनको भी एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए थे वहाँ पे। जॉन लॉ वाज द नेम ऑफ द गाय हु इंसिनुएटेड दैट एंटायर थिंग एंड वहाँ पे भी सिमिलरली ये बबल बर्स्ट कर गया जैसे यहाँ पे बर्स्ट करा यूके में, राइट? So Howard Marks has a very wonderful line to say, just to remember guys, that the air goes out of the balloon faster than it went in. जब आप एक बलून भरेंगे तो भरने में बहुत देर लगती है बट हवा निकालने में ज्यादा देरी नहीं लगती, राइट? तो ये मिसिसिपी कंपनी का स्टॉक चार्ट है which fell drastically within 2-3 months and many people claim that this event actually led to the French Revolution. And again intelligent investing book से एक excerpt है which I'll read out to you guys. Newton lost a lot of money in the South Sea Company. Sensing that the market was getting out of hand, the great physicist muttered that he could calculate the motions of heavenly bodies, but not the madness of the people, right? Newton dumped his South Sea shares, pocketing 100% profit, totaling to 7,000 pounds. तो बेसिकली न्यूटन ने पहले शेयर्स खरीदे थे एंड उसने 7,000 पाउंड्स पे प्रॉफिट में बेच दिया। पर जब उसने सेकंड टाइम लिया, उसने अपने जब दोस्तों को देखा कि मेरे दोस्त ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, तो दिस टाइम ही पम्प्ड इन मोर मनी, मतलब उन्होंने एलोकेशन बढ़ा दी। पहले सपोज करो मैं किसी स्टॉक में 3% एलोकेशन करता हूँ, सेल आउट करने के बाद फिर मैं 30-40% एलोकेशन के साथ आता हूँ। सो दिस टाइम ही एक्टेड लाइक अ स्पेक्युलेटर एंड ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. For the rest of his life, he forbade anyone to speak the word South Sea in his presence. Right? Such was the impact of FOMO कि उन्होंने और shares खरीदे इस time पे, and such was the loss aversion or regret कि he couldn't tolerate anyone speak the word South Sea in his presence. So that is what happened. This is the chart of the South Sea bubble that which 1 minute guys. So this is a this is a chart of the South Sea bubble जिसमें न्यूटन का पूरा एक्शन था. तो न्यूटन इन्वेस्ट अ बिट, ही एग्जिट्स हैप्पी बट ही गेट्स फोमो, क्योंकि अगर आपका नेबर आपसे ज्यादा जल्दी रिच हो रहा है तो काफी लोगों को एनवी हो जाता है, राइट? बट वी नीड टू बी कंटेंट विद आवरसेल्व्स एज इन्वेस्टर्स. So Newton's friends get rich and Newton re-enters with a lot, and this time Newton exits broke. So Newton was a great physicist, but he was a sad investor because he didn't have the EQ. Now coming to our learnings कि हम बबल की learnings कैसे लगा सकते हैं, तो there are basically 3 big learnings कि बबल हमेशा एक सेक्टर में बनता है, कभी कभी कुछ स्टॉक्स में भी बनता है पर यूजुअली हमेशा एक सेक्टर में बनता है. फॉर एग्जाम्पल 2008 में एक अकेला डीएलएफ का वैल्यूएशन इंटायर फार्मा के वैल्यूएशन से ज्यादा था. मतलब फार्मा में 50-60 कंपनी से एक ही कंपनी का रियल एस्टेट में वैल्यूएशन ज्यादा था. So again, we ventured into the bubble. We ventured into the bubble territory, right? Now we can also look at the chart DLF का along with. So there's a feature on money control जिसमें हम DLF और उस टाइम पे जो भी इंफ्रा बबल की कंपनीज थी उनका स्टॉक आपस में कंपेयर कर सकते हैं. So one was DLF, other one was HDIL, third one was I think so Suzlon, right? Suzlon बहुत famous हुआ था. एंड कुछ लोगों के तो शायद से आंसू आ जाएंगे जब मैं स्टॉक का नाम लिखूंगा, दैट इज रिलायंस पावर. काफी लोगों ने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करा था, मेरे पूरे घर ने ही इन्वेस्ट करा था. इनफैक्ट आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम अप्लाइड फॉर द आईपीओ. सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड ओवर द लॉन्ग रन. This is what happened over the long run. All of them are down, right? Even DLF is down by 75%. HDIL is down by 99%. Suzlon is down by 98%. Reliance Power is down by 99%, right? Another recent bubble was NBFC bubble, real estate NBFC bubble, just to be precise. So Piramal Enterprises, Edelweiss, IIFL Finance, right? Your DDHFL and your India Bull Housing Finance. India Bull Housing Finance. Let's look at the chart. So there are two parts of the chart. Those are 18 tak, all these companies did well, but ever since the IL&FS crisis burst, most of them crashed. Now these companies were trading at a price by book of 3 times, 4 times. Some of them were trading at 5 times. Stories like Edelweiss is the next Goldman Sachs were being peddled all around the capital markets. But this is a very very big problem, and bubble में यही होता है. Bubble में narrative बहुत ज़्यादा strong हो जाता है, and with little data to follow up, and data bias भी आ जाती है. Narrative bias अपने आप ही data को mold कर देती है
कि इन कंपनीज में कुछ ऐसा हो रहा है, एनबीएफसी में कुछ ऐसा हो रहा है, पीएसयूज लेंड नहीं कर सकते, एनबीएफसी मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। तो बबल स्पॉट करने के 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमेशा बबल में परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो में परसेप्शन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा एंड कुछ टाइम के लिए अर्निंग्स भी उसके साथ ऊपर जाएंगी। But we as investors have to ask ourselves whether these earnings are sustainable or not. क्या ये एक पीक साइकिल अर्निंग है, क्या यहाँ एक नॉर्मल साइकिल अर्निंग है? यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियो। आपको अपने दिमाग में करना है व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन इमेजिन फॉर दिस कंपनी, because most of the losses happen to investors when they go wrong on the business model. If you get the right business model, believe me, and if you get the right valuations, थोड़ा सा महंगा भी ले सकते हो right business model में, you will eventually make a lot of money in India, because India offers a very good opportunity for growth in a lot of sunrise sectors. But over here, the earnings weren't sustainable. Second is all these financial newspapers, all the investors start peddling these businesses. And the third is in a bubble, a very common line is leverage. Because money chases spots जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न आए इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस टाइम पे आपको पता लगेगा देयर वाज सो मेनी पीपल हु अप्लाइड फॉर एन एनबीएफसी लाइसेंस बट दे कुडंट गेट बिकॉज आरबीआई डिड सम टाइटनिंग एंड fortunately for them and unfortunately for the sector now, the entire sector has collapsed and काफी सारी स्टोरीज और भी जो पेडल होती थी that Piramal is the next one Buffett, right? But people forgot कि when a management with a reputation of brilliance meets a business with a poor reputation, is the reputation of business which remains intact. Business की reputation remains intact rather than the management. Piramal is a great capital allocator, but again, the reputation of the NBFC, which is a super cyclical business, that remained intact. And the stock is corrected by, I don't know, I think maybe close to like 60-70% from 2700 peak to 900 rupees right now. Right, so guys, these are all the lessons which we can learn and which we can use to spot bubbles. First is PE gets re-rated highly, entire sector gets re-rated. Second is कि जो आपकी shitty companies भी होती हैं DHFL या फिर जो अजीब सी companies भी होती हैं sector में, weak companies also get re-rated. The third lesson is leverage, guys. आसपास सारे लोग उसकी बात कर रहे होंगे एंड थर्ड आपको क्या रहेगा कि काफी लोग लेवरेज डाल रहेंगे उसमें, क्योंकि बिना लेवरेज के बबल को स्टेरॉइड ही नहीं मिल सकता। बबल ग्रो करने के लिए आपको क्या डालना है? लेवरेज। एंड लेवरेज क्या है फाइनेंस में? स्टेरॉइड। अब जैसे ही स्टेरॉइड डालेंगे उस बबल की अपने आप ही स्ट्रेंथ बन जाएगी। So thank you for joining us, guys. Do subscribe and like to our channel.